20th. Yes, Saurav, good morning. Okay. So far we have seen that in context of file handling, we have three different types of files to deal. Or rather, two main types: text files and binary. Within text, we can classify into sort of normal text या text भी लिख सकते हो direct, and CSV. We have seen this, how to read and write CSV. Now we'll be seeing binary files. Hope all of you have gone through CSV files. वो देख लेना, वो फिक्स टाइप के क्वेश्चन है, उसे चेंज नहीं होंगे. So now we'll start with binary files. This you can write cannot be understood by humans. As the name suggests, it is in binary form. Cannot be opened or read using normal text editors. Okay, then what else can you write? Contains details of images, audios, videos. Okay. Even text, ऐसा नहीं है text नहीं हो सकता, text भी हो सकता है, etc. Examples was are in PDF, image file, audio file, video files, etc. Right. So I think
कैसे समझेंगे कि कोई भी फाइल बाइनरी है? By merely looking at it, and if you cannot understand it, that means it is in binary form. Okay. All right. So now यहाँ तक क्लियर है, इसमें तो कुछ है होना नहीं चाहिए डाउट बेसिक. So I was just talking some basic things about how to identify which file is binary file and which file is a text file. So and what text files क्या होंगे? Just which can be understood by humans, which can be open in normal text editors, notepad वगैरह में ओपन कर सकते हो. तो वो सब तुम्हारे एक और फीचर लिख सकते हो उसमें. Special softwares may be required to read or open them. For example, a PDF file can only be opened using PDF reader. Yeah, उसको टेक्स्ट एडिटर से PDF फाइल को you cannot open. और इमेज को you can only open through image viewer software और image editor software. You cannot open it through notepad. ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो you should keep in mind. Fine. Now, just a minute. So, now coming to the topic of working with uh, my group. So, okay. So, right. So, उससे पहले एक और टॉपिक देख लेते हैं, स्मॉल छोटा सा टॉपिक. छोटा सा टॉपिक में आएगा serialization and deserialization. Serialization and deserialization. Deserialization. Okay. What is serialization? Converting an object when I am saying of any data type, int, float, char, कुछ भी, sorry, string, dictionary, tuple, list, ये सब जो है, what that is what I'm meaning by object, to stream of bytes, to stream of byte or to byte stream. Byte stream. And why should we convert an object to byte stream? So that they can be stored on a disk that, हाँ प्रियंका, I'll do it. मैं अभी before I end the class I'll do it. Okay. Byte stream so that object, so that
they can be stored on disk, on a disk, and or sent over a network. Or stored in a database. ठीक है? सो स्टोर्ड, इसको हम लोग ये बोलते हैं, स्टोर्ड ऑन अ डिस्क को मेकिंग persistent भी बोलते हैं. This is also known as persistency. Persistency means that it will last long. ठीक है, आज हमने कोई डिक्शनरी को, if you have made it into stream of byte and then serialized it and saved it on your hard disk, then tomorrow again the same object, that is your list or tuple or dictionary, can be opened in the same state. Okay, so इसका पर्पस वही होता है. Just give me a minute. Just give me a minute. Okay. इनकोडिंग, देखो इनकोडिंग डिकोडिंग तो मतलब हो गया कि यू आर समवेयर स्क्रैम्बलिंग इट और चेंजिंग द ओरिजिनल फॉर्म. यहाँ पे भी फॉर्म चेंज कर रहे हैं, बट इट इज नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, इनकोडिंग डिकोडिंग टर्म इज मेनली यूज्ड इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मतलब क्या, कभी बात कर रहे हैं तो कोई डेटा को कोई सिक्योरिटी पर्पस के लिए कर दिया, सो दैट इज द मेन पर्पस हियर. बट यहाँ पे मेन पर्पस उसका कम्युनिकेशन को स्क्रैम्बल करके डिफिकल्ट टू डिसाइफर, वो सब पर्पस नहीं है. दैट कैन बी, दैट कैन बी वन ऑफ द पर्पस, बट यहाँ पे हो जाता है कि सिंपली मेकिंग इट इन द फॉर्म ऑफ मशीन अंडरस्टैंडेबल बाइनरी फॉर्म. ठीक है, और ठीक है, तो वो पर्पस है इसका कि मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म और डिस्क पे सेव करने वाला फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में आज जो स्टेट था, सॉर्ट ऑफ, मान लो कि तुमने आज एक टपल डिफाइन किया या लिस्ट डिफाइन किया, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, राइट, और ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, या एक डिक्शनरी डिफाइन किया, 1 इंडिया एंड 2 पाकिस्तान, ऐसा कुछ. जस्ट गिविंग सम रैंडम एग्जांपल्स. और इसको तुम, यू वांट टू सेव दिस एंड दिस, इसको तुम ऐसे सेव करना चाहते हो कि ये एग्जैक्ट स्टेट विद दिस सेम वैल्यू गेट्स कैप्चर्ड, एंड देन लेटर, कल उठो या परसों फिर आओ, नेक्स्ट डे आओ, नेक्स्ट ईयर आओ, यू कैन जस्ट फेच इट बैक अगेन फ्रॉम द दिस. ये जो था तुम्हारे डिस्क पे कहीं जो सेव था परसिस्टेंट स्टेट में, इसको एग्जैक्टली इन दिस सेम फॉर्म यू विल ऑब्टेन द डिक्शनरी और द लिस्ट बैक. ठीक है, दैट that is why you perform serialization and deserialization. और even कभी भी नेटवर्क पे भेजना हो, मान लो कि तुम from one computer to another, ठीक है, over the network, if there are two computers, right, and उसके फॉर्म में बीच में ये कनेक्शन है, if you have to send a list,
इसी फॉर्म में, लिस्ट ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी ऑब्जेक्ट या समथिंग विच इज टू बी ट्रांसफर्ड ओवर अ नेटवर्क, तो इसको फर्स्ट यू विल serialize it. By serializing you will make it into a byte stream. ठीक है, वो बाइट के स्ट्रीम्स, स्ट्रीम मतलब क्या, फ्लो, सीक्वेंस, फ्लो ऑफ सीक्वेंस, ऐसा कुछ बोल सकते हो, फ्लो ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, जीरोस एंड वंस, उस तरह के फॉर्म में वो डिवाइड कर देता है, एंड देन दैट कैन बी डायरेक्टली कैरिड थ्रू द वायर टू अनदर कंप्यूटर. नहीं तो लिस्ट को क्या, कैन यू सेंड द लिस्ट इनटू दिस, व्हाट विल द लिस्ट बी इंटरप्रेटेड एज while you are sending? So सबसे पहले उसको serialize करना पड़ेगा, and then that serialized object can be transferred over network as well very easily. So that is again another purpose. Right. So that is why we can we use generally serialization. Right. Okay. तो ये समझ में आया सीरियलाइजेशन का पर्पस. जब कोई सीरियलाइजेशन पूछे, इफ somebody asks you what is serialization, you simply say कि that an object, by an object when I say I mean integer, float, string, tuple, dictionary, whatever, even functions, classes. वो हम लोग पढ़े नहीं है क्लासेस, बट जब समझ जाओ कि जो भी लिखे हैं उसको एग्जैक्टली सेम स्टेट में यू कैन सेव इट. और उसके बाद क्या है ना, मान लो इसको सीरियलाइज कर दिया तुमने. पता नहीं क्या स्पेलिंग लिखती है, वेट. सीरियलाइज किया तुमने. ओके, वंस यू सीरियलाइज इट, उसके बाद यू चेंज इट टू डिफरेंट फॉर्म. पर ये जो तुमने सीरियलाइज करके किया ना ऑब्जेक्ट को, एंड विच यू सेव्ड, सीरियलाइज्ड एंड सेव्ड. ओके, सो इसका स्नैपशॉट कैप्चर हो गया. इवन आफ्टर आफ्टर दिस, इफ इवन इफ यू चेंज इट, ठीक है, दिस सेव्ड स्टेट जो सीरियलाइज करके सेव कर लिया है तुमने, दैट वोंट बी अफेक्टेड. That will give it persistency. That means the form in which it was serialized, it will be saved in that form only. Later on, the modification of the actual object which was serialized, उसका serialized form change नहीं होगा. Okay, so that is also the advantage of this serialization. Sort of snapshot capture कर लेता है उस समय का, and that snapshot or with the exact state, with the exact values is saved, which can later be retrieved back. ओके, तो ये उसका पर्पस होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट और स्नैपशॉट कैप्चर कर लो, उसको स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट कर दो, एंड देन यू कैन सेव इट ऑन योर कंप्यूटर. यू कैन ट्रांसफर इट ओवर अ नेटवर्क, और यू कैन इवन सेव इट इन अ डेटाबेस. तो ये सब कुछ कुछ पर्पसेस उसके होते हैं. ये बताओ, ये इसका फील आया, कंसेप्ट है, समझ में आया? इज इट क्लियर, प्रियंका, कीर्तना एंड अदर्स? अच्छा, आज पलक भी आई है. वाओ, this morning really seems to be good. Okay. Palak, have you gone through that uh, CSV files? क्या पूछ रहा था प्रशांत? Stream of byte, flow of sequence of bytes. Just a minute. अच्छा, एक बात बताओ प्रशांत, कि बाइट स्ट्रीम में, बाइट में क्या होगा, बिट्स होंगे. तो कंप्यूटर इज अ डिजिटल डिवाइस, इट वर्क्स ऑन ओनली बाइनरी बिट्स. सो अगर उसको बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे, तो हाउ एल्स विल इट बी मैनेज्ड बाय कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर लव्स बाइनरी डिजिट्स और बाइनरी फॉर्म. So whatever you have to make persistent, whatever you have to make flow through
wires over network, first it has to be converted in a binary form. Then only persistency can be obtained, because computer being a digital device will only work on binary language. So it's a flow of bits. ठीक है, zeros and ones के सीक्वेंस के 8 चंक्स में बांट देगा तुम्हारे डिटेल को. ओके. ठीक है, नहीं नहीं कोई बात नहीं. I love absurd questions because they are the ones which make most sense. और वो सबसे ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करता है. अच्छा. Luck, I mean, I think she has replied to earlier question. She has gone through. Okay. ठीक है. Good. Right. तो प्रियंका, is it clear? Shall I repeat once again? बता दो. इसमें कुछ नहीं है ज्यादा देखने का. ये और छोटा है. ये CSV से भी स्मॉल टॉपिक है. ओके, क्लियर. और shall I explain again? ये yes कौन सा था? या क्लियर वाला यस था? चलो, आई गेस शी हैज अंडरस्टूड. वो वाला यस बोल रहे थे. हाँ, मैंने लिखा है कि कहाँ लिखा है? वेयर हैव यू रिटन? नहीं नहीं, आई वाज टॉकिंग, मतलब उसका अबाउट प्रियंका. वो यस सर बोले ना. ओके, एनीवेज, आई होप इट्स क्लियर. सो व्हाट इज डीसीरियलाइजेशन? डीसीरियलाइजेशन इज रिवर्स ऑफ सीरियलाइजेशन. ठीक है. मान लो डे बिफोर यस्टरडे यू सीरियलाइज्ड एन ऑब्जेक्ट और उसका स्नैपशॉट कैप्चर करके कहीं सेव कर लिया कंप्यूटर में. एंड इफ यू वांट टू रीड इट बैक कि लास्ट ईयर या लास्ट मंथ या लास्ट वीक वट एवर यू हैड सीरियलाइज्ड, दैट मीन्स यू हैड कन्वर्टेड इनटू फ्लो ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स. ठीक है. और उसका बाइट स्ट्रीम जिसको कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करके यू हैव सेव्ड इट इन अ परसिस्टेंट मैनर ऑन योर डिस्क. दैट मीन्स सो दैट इट लास्ट लॉन्ग. या किसी दूसरे कंप्यूटर पे भेज के नेटवर्क में यू हैव सेव्ड इट और यू हैव स्टोर्ड इट इन अ डेटाबेस, एंड यू वांट टू फेच इट बैक एंड रीड इट अगेन कि व्हाट यू हैड सीरियलाइज्ड. ओके. सो you will say, just a minute. uh, yeah. uh, और यहाँ पे एक और चीज लिखते हैं, डेटाबेस और लोडेड इन अ प्रोग्राम लेटर. इसमें ये भी ऐड कर सकते हो. किसी प्रोग्राम में भी लेटर लोड करना है तुम्हें. मतलब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी उसे तुमको फेच करना है उस तरह सेव्ड वैल्यू को, ऑब्जेक्ट को. दैट कैन आल्सो बी डन. हाँ. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट डीसीरियलाइजेशन. तो stream serialized stream of bytes, uh, you can write later on this serialized stream. Okay. Serialized character stream or serialized byte stream
byte stream can be retrieved spelling check कर लेना, back to the Python object, to the original Python object. When I say Python object, I mean वही सब tuple, dictionary, जिसको भी तुमने first you serialized, took an object, serialized it, saved it, later you want to retrieve it, तो reverse process होगा, deserialize it and get the same Python object जिसको तुमने serialize किया था. Okay, so this process is known as deserialization. Process of obtaining Python object okay from serialized form is serialized form मतलब which was originally in the form of byte stream. इसको लिख देता हूँ, byte stream is known as deserialization, मतलब reverse of whatever it was there in serialization. Vishnu Priya has joined today. Okay, ठीक है. Deserialization मतलब किसी पाइथन अच्छा गुड, हाँ तो किसी पाइथन ऑब्जेक्ट को when you convert it into a flow of byte, ठीक है, and then you save it on a disk, so later on when you want to fetch it or retrieve it back, you convert it back to the again Python object. That process of retrieving the original Python object from the serialized form or the form in or the byte stream form is known as deserialization. ठीक, right. So now एक और चीज याद रख लो, I'll mention serialization and deserialization should not be confused with should not be confused with compression and decompression. Compression and decompression. Why? What do we mean by compression? Compression का मतलब होता है to make it compact, optimal, so that the size of the detail reduces. Here we are not reducing the size.
ठीक है, हम इसको, आर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू reduce the size and then save spaces. We are not reducing the size by bits, by number of bits. We are simply making it compatible so that it can be stored on our hard drive or can be sent over the network or saved in databases. हमारा object उसको छोटा करना नहीं है. We don't have to make the object smaller in size. ठीक है, ऐसा हमारा कोई एम होता तब बोलते कॉम्प्रेशन या डिकम्प्रेशन. कॉम्प्रेशन का फाइन मतलब क्या होता है कि यू विल रिड्यूस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, पर हम लोग रिड्यूस नहीं कर रहे हैं. वी आर सिंपली मेकिंग इट persistent, मेकिंग इट compatible so that it becomes persistent. ओके, तो डोंट कंफ्यूज इट विद compression and decompression compression. ठीक है, सो हियर reducing size, so this is not reducing size. और इसका मतलब क्या, increasing size. Okay, so if this much is clear, let me know. Also remember that serialized object is always in binary form. Okay, यहाँ पे लिख देता हूं मैं. Serialized form is binary form. Okay, serialized form is binary form. So we have seen, इसीलिए is it clear कि what we have discussed so far? So how does compression work? What does it? Uh, what does it is to make the file size small? अच्छा, वो क्या प्रोसेस होता है ना, वो उस पर मत जाओ सौरभ, क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है. उसमें कुछ करता है, ऑप्टिमाइजेशन करता है कि अननेसेसरी डिटेल्स जो होगा ना फाइल का उसको रिमूव कर देता है, सो दैट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स कैन बी reduce. At times it compromises with the quality of your file. ठीक है, अगर एच डी में प्रिंट है तो उसके डिटेलिंग को कम कर देगा, सो दैट यू गेट द लोअर क्वालिटी डिटेल, लोअर क्वालिटी वीडियो, बट वीडियो विल बी देयर. तो लोअर क्वालिटी में उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा. तो कुछ डिटेल करता है, कुछ क्वालिटी का रिडक्शन करता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स कम कर देगा. तो मतलब ओवरऑल यू कैन स्टिल आइडेंटिफाई, बट स्टिल द क्वालिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज. तो इस तरह के कुछ कुछ काम होता है उसमें, तो दैट मेक्स द बिट्स लेस. ठीक है, दैट इज नॉट द ओनली वे ऑफ रिड्यूसिंग क्वालिटी. देयर आर सम अदर थिंग्स एज वेल, जिसको वो डिटेल्स को रिमूव कर देता है. ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ if this much is clear, we'll see what is pickling and what is unpickling. What is pickling and what is unpickling? Okay, so pickling means serializing Python object structures. Python objects, that means different data types, integer, float, dictionary, tuple. And unpickling means deserializing Python object. Serializing Python
ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो दैट इज द रीजन वी यूज pickle module. So we use pickle module. We use pickle module to serialize and deserialize Python objects in Python programming. D S E R I. अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा था। यहाँ पे पाइथन मत लिखना, बिकॉज दिस कैन बी डन इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल। सो इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट। अगर जावा में लिख रहे हो तो जावा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सी प्लस प्लस में लिख रहे हो तो सी प्लस प्लस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो इन जनरल यूज द वर्ड ऑब्जेक्ट, बट व्हेन यू आर saying pickling, तो pickling is a term specific to serialization in context of Python. इसलिए यहाँ पे I have used serializing and deserializing Python objects. ठीक है, so जब भी हमारा, अब क्या करेंगे हम लोग, we will learn how to serialize and deserialize objects in Python, which will of course be in binary form। और जो वो सेव होगा ना हमारे हार्ड डिस्क पे, जो भी डेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट टू और सीरियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट सो दैट दे कैन बी स्टोर्ड ऑन अ डिस्क। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल पिक अप पाइथन ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो डिक्शनरी हो, लिस्ट्स हो, टपल्स हो, एंड वी विल सीरियलाइज इट, एंड देन वी विल स्टोर इट इन अ फाइल। तो जिस फाइल में स्टोर करेंगे ना इसको ऑन आवर हार्ड डिस्क, दैट फाइल विल बी अ बाइनरी फाइल। ठीक है, तो किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट को हम लोग, वी विल सीरियलाइज इट, दैट मींस वी विल पिकल इट एंड वी विल स्टोर इट इन बाइनरी फॉर्म, in files which will be binary files, that and that is what we have to study under binary files, ki how to serialize and deserialize objects and save it on your computer as binary files. So under binary files we will be learning how to, yeah, spelling गलत लिख रहा हूं मैं, okay, serialize and deserialize. That means, when I am saying serialize, I mean pickle and unpickle Python objects, Python objects, and save it in binary form. That means byte stream, byte stream के फॉर्म में, in files, और इस फाइल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, known as binary files. Okay. तो किसी भी तरह के डेटा को तुम सीरियलाइज करके, दैट मीन्स पिकल करके, उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके, यू कैन स्टोर इट ऑन योर कंप्यूटर टू रिट्राइव द एग्जैक्ट सेम स्टेट एंड फॉर्म और द स्नैपशॉट जिस समय उसको पिकल किए थे,
ठीक है, दैट मीन सीरियलाइज किए थे, रिट्राइव इट बैक फ्रॉम द बाइनरी फॉर्म बैक टू योर यूजेबल पाइथन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वो अनपिक लिंक कहलाएगा, राइट. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन अंडर द हेडिंग ऑफ बाइनरी फाइल, ठीक है, and that will be done using pickle module. So is it clear कि what we have to study under the heading of binary file कि कैसे किसी भी Python object को serialize करके उसको you will store it on your hard disk to capture in that and later on retrieve it exactly in that form. Yeah, and the serialized object that is stored in the binary form is actually in the binary form, a binary format, a byte stream, and that file containing that serialized object is known as binary file. Okay, because it is containing all the data in binary form और बाइट स्ट्रीम फॉर्म. तो बस यही हम लोगों को पढ़ना है, इसको मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, विल जस्ट विजिट द क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन हमने देखा था उसका, सो दैट इट मेक्स सेंस. इधर गया, हाँ. देखो लिख रहा है अ बाइनरी फाइल डिटेल्स डॉट दैट, दैट मतलब क्या डेटा, वो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट जान लो कि एक नाम है ये फाइल में. एंड व्हाट डज दिस फाइल कंटेन, हैज स्ट्रक्चर दिस, ठीक है, ये उसके अंदर एक डिटेल रखा हुआ है, लिखा हुआ है बाइनरी फाइल. सो एक बाइनरी फाइल में एक लिस्ट कंटेन्ड है, एंड द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज item number, item name, and quantity and price. So somebody has embedded or somebody has stored a list, ठीक है, or not one list, maybe more than one list, after making it in the binary form or after serializing it in a file known as details.dat. अब बोल रहा है write a user defined function, that is एक function बनाना है ये, which when called, ठीक है, to add further records to this file. ठीक है, मतलब ऑलरेडी देयर में बी सम रिकॉर्ड्स, या खाली भी हो सकता है ये फाइल, बट इन दैट फाइल फर्दर यू हैव टू ऐड, एक बार जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वन मोर रिकॉर्ड शुड बी एडेड विच इज एग्जैक्टली लाइक दिस. सो बोल रहा है कि वेन एवर दिस फंक्शन क्रिएट फाइल इज कॉल्ड, you should pickle or serialize another list like in which is in this form and put it inside this, or save it in the form in the byte of stream form, byte stream form in this file again. तो हमें यहाँ पे क्या करना है पार्ट ए में, एक नया इस तरह के मैचिंग में एक लिस्ट कंटेनिंग जिसमें कि उसका पहला वैल्यू आइटम नंबर होगा, लेट्स से 100, आइटम नेम होगा फैन, क्वांटिटी 5, प्राइस ऑफ ईच पीस मान लो 600 रुपीज. तो इस तरह का एक नया डिटेल हम लोगों को सीरियलाइज करना है लिस्ट को, दैट मीन्स पिकल करना है लिस्ट को, एंड देन यू हैव टू राइट दैट पिकल्ड ऑब्जेक्ट एंड सेव दैट पिकल्ड ऑब्जेक्ट एज अ न्यू एंट्री इन दिस फाइल. ओके, फिर बोल रहा है राइट अ फंक्शन काउंट रिकॉर्ड विच एक्सेप्ट्स नेम एज आइटम नेम एज पैरामीटर. मान लो यहाँ पे तुमने फैन दिया था, तो एक कोई भी नाम लिख लो फैन, ठीक है, एंड काउंट्स द नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ आइटम्स दैट कैन बी, अच्छा मतलब अब इस तरह के बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं फाइल में, ठीक है. डिटेल्स डॉट डेट में मान लो कि फर्स्ट रिकॉर्ड होगा आइटम नंबर 100, ओके, आइटम नेम इज फैन, क्वांटिटी समथिंग, प्राइस समथिंग. आइटम नंबर 110, यू कैन से बल्ब, बल्ब का क्वांटिटी 50, प्राइस समथिंग 20 रुपीज. ओके, फिर आइटम नंबर 105, लेट्स से यू कैन से ट्यूब लाइट्स सम क्वांटिटी. इस तरह करके मान लो बहुत सारे रिकॉर्ड्स उसके अंदर में सीरियलाइज करके लिखे हुए हैं इस फाइल में, दैट मीन्स पिकल करके लिखे हुए हैं, एंड दैट इज सेव्ड ऑन योर बाइनरी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फाइल ऑन योर हार्ड डिस्क. ठीक है, पिकल होने के बाद तो यू हैव टू अनपिकल दोज. अब इस फाइल को अनपिकल करना है, ठीक है, दैट मीन्स डीसीरियलाइज करना है,
और उसके बाद वन बाय वन इस तरह के जितने भी उसमें लिस्ट सेव्ड हैं उसको फेच करना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड कि उसमें से कितने लिस्ट ऐसे हैं जिसमें हाउ मेनी सच लिस्ट्स आर देयर वर पिकल्ड इनसाइड इट, ठीक है, और सीरियलाइज इनसाइड इट, विच वर हैविंग अ नेम, आइटम नेम जो भी यूजर ने बताया. लेट्स से इफ यूजर गिव्स फैन, तो every time you will unpickle one pickled ऑब्जेक्ट, पाइथन ऑब्जेक्ट, दैट इज ये एक रिकॉर्ड निकालोगे और उसमें चेक करोगे क्या उसका आइटम नेम यही है जो यूज यहाँ पे हमें चेक करना है. लेट्स से फैन, क्या उसमें है, मान लो कि 5 रिकॉर्ड्स आर दे, तो फर्स्ट रिकॉर्ड को वहां पे अनपिकल करोगे, देखोगे क्या फैन है उसमें, नहीं. सेकेंड रिकॉर्ड को अनपिकल करोगे, क्या फैन है उसमें, नहीं. थर्ड को देखोगे या फैन इज देयर, सो दैट मीन्स यू हैव टू इंक्रीज द काउंट बाय 1, ठीक है. एंड इसी तरह सेकंड थर्ड को करोगे, तो यू विल चेक कि जितनी बार अनपिकल करोगे एक नए रिकॉर्ड को, उतनी बार मैच करोगे इस लिस्ट के आइटम में कि इसका सेकंड एलिमेंट क्या ये नेम से मैच कर रहा है. कुछ इस तरह का प्रोग्राम है ये. दैट मीन्स वन पार्ट डील्स विद serializing object and writing to binary file for persistency for saving it in your computer. Another file deals with जो भी इस फाइल में पिकल किए हुए थे उसको वन बाय वन अनपिकल करना है. दैट इज रिट्राइविंग द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल लिस्ट ऑब्जेक्ट वन बाय वन, ठीक है, एंड देन बेस डूइंग सम प्रोसेसिंग. सो वन पार्ट डील्स विद पिकलिंग, अनदर पार्ट डील्स विद अनपिकलिंग. सिमिलरली इसमें भी है, हैज द स्ट्रक्चर. इसमें एक टपल को पिकल किया गया, देखो, ओके, और उसमें भी कुछ रीड कर, इसमें इसमें सिर्फ अनपिकल करना है. दैट वुड रीड कंटेंट्स. रीड कब करोगे, जब वो पहले से फाइल में जाके सेव्ड है, दैट मीन्स पिकल्ड है, तब अनपिकल करोगे तो दैट मीन्स यू विल बी फेचिंग बैक, दैट इज नोन एज रीडिंग. तो इसमें केवल अनपिकल करना. तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कल देखेंगे. आज मैंने बस व्हाट इज बाइनरी फाइल के अंदर क्या पढ़ना है, दैट इज सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, in our case of Python program, which is known as pickling and unpickling in context of Python. And in your exam, the question will come in such a way. Question number 22. अच्छा, देखते हैं अभी, ठीक है. तो in your exam, a question will definitely come जिसमें one part will deal with pickling, another part will deal with unpickling. ये भी fixed है, 5 marks ये आएगा. अच्छा, what was question number 22? प्रियंका का दिमाग घूमता रहता है इधर उधर. Let's see क्या है. कुछ टफ होगा तो आज नहीं बताऊंगा, मुझे भी देखना पड़ेगा ना. अच्छा, ये डेटा बेसिस का. सी प्रियंका, विल लेट्स नॉट टेक इट वन बाय वन. इसको हम लोग ये फाइल हैंडलिंग के बाद ना पूरा डेटाबेस ही शुरू करेंगे रिवीजन का. ओके, तो उसमें हम लोग सब तुमको इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको एग्जैक्टली वी विल बी सीइंग प्रैक्टिसिंग डेटाबेस फ्रॉम द स्क्रैच. जितने क्वेश्चन आज तक लास्ट 5 years में आए हैं और जो आ सकते हैं सैंपल पेपर्स में है, राइट, सो दैट वी विल बी सीइंग. ठीक है, तो अभी ये दो दो 4 मिनट में डेटाबेस नहीं हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं. इट विल नीड सम टाइम, मे बी 5 days 10 days. तो लेट्स कीप इट फॉर दैट टाइम. डोंट वरी अबाउट दिस स्कूल के एग्जाम एंड मार्क्स. ठीक है, तो लेट्स टेक इट वन बाय वन. राइट, सो हाउ, अब हमारा जो है कि हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. अभी तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज कि बाइनरी फाइल में क्या पढ़ना है, दैट मींस पिकलिंग अनपिकलिंग. एंड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, वन पार्ट विल बी डीलिंग विद पिकलिंग ऑफ आइदर लिस्ट्स और dictionaries or you can say tuples or even integers. But and another part will be dealing with again reading back from the binary file which has the pickled structure. ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देना, कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर. ऑब्जेक्ट के जो शेप एंड साइज को वो करता है, साइज को पिकल कर देता है, सीरियलाइज कर देता है. एनीवेज, that doesn't have much significance, उतना ध्यान नहीं देना उसमें. Okay, so we have got the gist how to do it in the program, how to serialize using pickle. वो two lines का program है, that won't take more than 20-25 minutes. I will see it tomorrow. Okay, so आज जो हम लोग देखे हैं वो समझ में आया? Was it clear?
Let me know, then we'll end the class. Okay, great. ठीक है. Then what we'll do is we'll stop here and